Minash-Shaytanir-Rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum. Students, in our previous session, we have done a quick revision of chapter number 1. In our today's session, we will do a quick revision for chapter number 2. So let's start. So chapter number 2 is about the 3 states of matter. In this chapter, we have studied about the 3 states of matters, that is solid, liquid and gas. So we will start with gaseous state. Gaseous state can be defined with kinetic molecular theory, and the postulates of kinetic molecular theory are according to kinetic molecular theory, there are large distances between the gas molecules. They are far apart from each other, and the molecules are in random motion, continuous random motion in all directions. The collisions during their motion are totally elastic. Whenever they exert to the walls of container, they exert pressure, which is known as gas pressure. There are no attractive or repulsive forces between the gas molecules. And the kinetic energy of gas molecules is directly proportional to the temperature. There are some faulty assumptions in kinetic molecular theory, which means there are some points in the kinetic molecular theory which are not practically proven. So, what are these points? VanderWaal pointed out the following 2 assumptions in the kinetic molecular theory are faulty or false. The volume occupied by the gas molecules is negligible in comparison to the total volume of the gas. This assumption is nearly valid if the pressure is low. The volume occupied by gas molecules is negligible. जो gas molecule का अपना वॉल्यूम होता है, उसको जो है वो कहते हैं कि वो नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस. This assumption is correct for low pressure conditions where molecules are very far apart from each other. But in case of high pressure and small areas or volumes, when there is a limited volume for a gas to occupy, so the molecules are not much far apart from each other. So in that case, that point is wrong. The molecules do not exert any force of attraction upon each other or one another. So basically, according to KMT, there is no attractive force between the gas molecules, but this is also valid for low pressure and large volumes. But when the pressure is high and volume is small, then there is some attraction between the gas molecules. Now, behavior of gases, how they behave. Diffusibility, they have wide diffusibility. Diffuse होने की ability जो है वो इनकी बहुत ज़्यादा है, because according to kinetic molecular theory there are large distances between gas molecules. So molecules of other gas can diffuse with the molecules of any gas, because the molecules of any other gas can occupy the spaces between the gas molecules, any other gas molecule. Compressibility, just like diffusibility, they are also very compressible. Their ability to be compressed is very high. It is, according to kinetic molecular theory, this behavior attributes to the presence of again large distances or spaces between gas molecules. So when pressure is applied, molecules come closer to each other and the spaces are minimized and the gas can easily be compressed. Pressure.
they exert pressure whenever they are continuous random motion, and whenever they strikes to the wall of container, they exert a pressure on the wall of container. Gas laws. We have also studied the gas laws, and we have done the problems related to gas laws. So first of all, we will study Boyle's law. According to Boyle's law, volume of a gas is inversely proportional to the pressure, applied pressure at constant temperature. किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उस पर अप्लाई होने वाले प्रेशर के कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बॉयल से बताया कि जिससे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, या वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन है, एक पैरामीटर बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। इधर से एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था जिससे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। सो इधर अगर हम देखें तो P1 is the initial pressure and P1 is the initial volume at that specific pressure. P2 is the final pressure and P2 is the final volume at that pressure. Another law, Charles law. Okay, according to Charles law, volume is directly proportional to temperature at constant pressure. What did he say? कि वॉल्यूम जो है वो किसी भी गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के कांस्टेंट प्रेशर पर। जैसे जैसे डायरेक्ट रिलेशन है, इसका मतलब दोनों पैरामीटर्स जो है वो अगर एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम हो रहा दूसरा भी कम होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डिस्कस करें तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, kinetic energy of gases is directly proportional to temperature. So when temperature is increased, the kinetic energy of molecules also increase and their motion also increases. So as a result, they move faster and the volume is increased. And इधर से हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, V1/T1 is equals to V2/T2 के V1/T1 ये आपकी इनिशियल कंडीशन है, V2/T2 ये फाइनल कंडीशन है। Another law, Avogadro law. According to Avogadro's law, volume of a gas is directly proportional to number of moles at constant temperature and pressure. So वॉल्यूम जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे वॉल्यूम ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल कंटेन 6 × 10 6.02 × 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वॉल्यूम नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे और वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। Okay, we have studied the general gas equation, which was derived by combining all these gas laws, Boyle's law, Charles' law, and Avogadro's law, and the formula which was finally obtained by combining all these laws was PV is equals to nRT. This formula is used while solving problems related to general gas equation. And another formula which is derived from the general gas equation is P1V1/T1 is equals to P2V2/T2. We have used both these formulas in problem solving. Okay. Graham's law of diffusion. According to Graham's law of diffusion, rate of diffusion of any gas is inversely proportional to the square root of its density. कि किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किस रेट से जो है वो डिफ्यूज करेगी वो जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके डेंसिटी के स्क्वायर रूट के। सो इधर से हमने
अगर for two gases if you need to compare the rate of diffusion of two gases, तो ये formula can be used R1 over R2 is equals to D2 under root over under root D1, and as density is directly proportional to mass, and D can be replaced with mass, which is molecular mass. Here when we were solving the problems, we were putting the molecular masses in place of m. Dalton's law of partial pressure. Dalton's ने जो लॉ दिया था उसके अकॉर्डिंग total pressure in a mixture of gases, total pressure, which is represented by capital P here, is equal to the sum of individual pressures. In a mixture of gases, अगर आपके पास एक कंटेनर है और उसमें आपके पास डिफरेंट गैसेस हैं, फॉर सपोज एक गैस ये है जिसके मॉलिक्यूल्स वाइट हैं, एक गैस फॉर सपोज ये है इसके मॉलिक्यूल्स पर्पल हैं, और फॉर सपोज एक गैस ये है जिसके मॉलिक्यूल्स येलो हैं। अब फॉर सपोज इस कंटेनर पर अप्लाई होने वाला टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो वो बेसिकली सम होगा उस प्रेशर का जो कि येलो वाले मॉलिक्यूल्स अप्लाई करें, वाइट वाले मॉलिक्यूल्स अप्लाई करें कंटेनर की वॉल पर, और पर्पल वाले, मतलब जितनी भी गैसेस मौजूद हैं इस मिक्सचर में उन तमाम के इंडिविजुअल प्रेशर्स को अगर आप सम करें तो आपके पास टोटल प्रेशर किसी भी मिक्सचर ऑफ गैस का आ सकता है। Okay, next is liquid state. Liquid state, as we know that gaseous state से किस लिहाज से different होती है, because gaseous state में molecules are very far apart from each other. They have got no definite shape or no definite volume. But in case of liquids, the molecules are not much far apart from each other as compared to gases, and they have got specific volumes, but the shape is not definite or specific. They got the shape of the container in which they are placed. So let's study the behavior of liquids. First of all, viscosity. What is viscosity? Viscosity is basically the resistance to the flow of liquids, and we have studied surface tension, which is basically the tension created on the surface molecules by the downward pull of inner molecules. Vapor pressure is basically the pressure exerted by vapors. Evaporation is the process of escape of liquids from the surface of a liquid, escape of molecules from the surface of a liquid. Boiling, which is basically a condition when the vapor pressure of any liquids become equal to the atmospheric pressure. So viscosity, विस्कोसिटी के हवाले से हमने कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस और फैक्टर्स वगैरह देखे थे। विस्कोसिटी बेसिकली किसी भी लिक्विड का रेजिस्टेंस टू फ्लो, और वो कितना थिक है या कितना थिन है, या इसकी विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है। It is also a parameter to measure or grading the oil or motor oil, और इसके हवाले से हमने जो है वो कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, सॉरी कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस स्टडी किए थे। Why some liquids are more viscous while others are less viscous. Basically viscosity depends upon the size of molecules, shape of molecules, temperature, and intermolecular forces of attraction. If there are more intermolecular forces of attraction, then the liquid will be viscous. So because intermolecular forces of attraction होने की वजह से molecules of liquid इस तरीके से एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं और ये लेयर्स के फॉर्म में होते हैं।
So during their flow, one layer slides over another layer. So if there is more attraction between two layers or between the molecules, then it will be difficult for this layer to slide over this layer कि वो इसके ऊपर से गुजरे, because उसको attraction feel होगी, तो उसके लिए उसमें से गुजरना मुश्किल होगा, तो विस्कोसिटी खुद ब खुद जो है वो हाई हो जाएगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसके फ्लो में। सरफेस टेंशन बेसिकली किसी भी कंटेनर में या कहीं भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हों, तो जो टॉप लेयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बैलेंसिंग फोर्स नीचे से डाउनवर्ड एंड साइड से तो मिल रही होती है, बट अपवर्ड बैलेंस करने के लिए इसको फोर्स को कोई फोर्स नहीं होती। ये फोर्सेस तो कैंसिल आउट हो जाती है, बट इस फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए ये फोर्स नहीं होती, बिकॉज इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। सो देयर इज अ डाउनवर्ड पुल, टॉप लेयर पर लिक्विड की डाउनवर्ड पुल होता है, इसकी वजह से जो है वो आपके पास ये बेसिकली सरफेस टेंशन की वजह से होता है, एंड सरफेस टेंशन टेंड्स टू मिनिमाइज द एरिया ऑफ अ लिक्विड, and this the reason the falling drop of a liquid is almost spherical in shape, because the area of a sphere is smaller than all other shapes. Vapor pressure is basically the pressure exerted by the vapors of any liquid, which are vapors are basically in gaseous form. So the pressure exerted by vapors is known as vapor pressure. Evaporation. So evaporation is basically a conversion of liquids into vapors. You can call it process evaporation. Basically, during evaporation, the molecules which have got higher energy as compared to the remaining molecules and other molecules of any liquid, वो उधर से escape हो जाते हैं surface में से liquid की, तो वो जो escape है उनका वो in the form of vapors होता है, तो वो liquid to vapor shifting कहलाती है। So, evaporation can occur at any temperature. There is no specific temperature for evaporation. जैसे जैसे जो मॉलिक्यूल की एनर्जी हाई हो जाएगी वो सरफेस में से निकलता जाएगा, मॉलिक्यूल की वो छोड़ता जाएगा उस लिक्विड को। Condensation is the opposite of evaporation. It is basically when vapors converts into liquid. अगर evaporation open किसी एरिया में हो रही है तो vapors आपके चले जाते हैं, बट अगर आप जिस जगह evaporation हो रही है उस कंटेनर को इस तरह से ये बैल जार से क्लोज किया हुआ है, तो अगर इस तरह से आप क्लोज कर दें तो इन मॉलिक्यूल्स को सराउंडिंग्स में स्केप होने की जगह नहीं मिलती, ये जाकर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर या लिड या जो भी बैल जार यहाँ मौजूद है, और एज अ रिजल्ट यहाँ पर जब ऑपरेशन कंटिन्यू रहती है तो वो लिक्विड वेपर जो है वो अगेन लिक्विड में कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वेपर जाकर अगर आप देखें तो यहाँ स्लोली यहाँ बढ़ रहे हैं इनकी क्वांटिटी, जब ये बढ़ते जाएंगे तो उसके दरम्यान में अट्रैक्शन, जब डिस्टेंसेस कम हो जाएंगे तो दरमियान में अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगी और वो वेपर यानी कि गैसेस टू लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। Boiling is achieved when the vapor pressure of any liquids becomes equal to the external pressure or atmospheric pressure. बाहर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, जब कभी भी वेपर्स जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो वो बॉइलिंग अचीव हो जाती है, और एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पॉइंट। Now, solid state. Solid state is different from liquid and gas just due to their different arrangement of the molecules in a solid. The molecules in a solid are very close to each other, and they have strong intermolecular forces of attractions. They have got specific volumes, specific shapes. So let's study the behavior of solids. Compressibility, their compressibility is negligible, they are very less compressed, बहुत मुश्किल से जो है वो यूजुअली इनको कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस करते हैं तो वो टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट जो कि नेग्लिजिबल है, बिकॉज
स्पेसेस होते ही नहीं है मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में कि अगर आप उनको प्रेस कर रहे हैं तो वो करीब हो जाए और कंप्रेस हो जाए। इंस्टेड ऑफ कंप्रेसिबिलिटी दे आर डीफॉर्म हो जाता है। अगर आपने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो डीफॉर्म हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। Diffusibility, their diffusibility is also negligible. They have not got any distances between the molecules कि एक सॉलिड के मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल से जो स्पेसिस उनको ऑक्यूपाई कर सके, उनके दरम्यान में स्पेसिस ही नहीं होते। they can be met। आप उनको टेम्परेचर प्रोवाइड कर कर उनके मॉलिक्यूल्स के जो इंटरेक्शन फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, उनको वीक कर सकते हैं, उनको ब्रेक कर सकते हैं और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फार अपार्ट हो सकते हैं, तो वो सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज मेल्टिंग। Sublimation, some solids are sublime, they can directly convert from solid to gas। अगर हम स्टेट्स को देखें तो लिक्विड सॉलिड जो है वो लिक्विड में जाएगा, देन लिक्विड से गैस में जाएगा, बट अगर डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में जा रहा है तो वो सब्लिमेशन कहलाता है। सो कंप्रेसिबिलिटी, दे आर नॉट कंप्रेसिबल वेरी, एंड इफ आर देन वेरी टू अ वेरी लेस एक्सटेंट। डीफॉर्म, अगर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो डीफॉर्म हो जाएंगे, शेप उनकी ख़राब हो जाएगी। Diffusibility, if you can see here, these are two solids, different solids। बहुत टाइम अगर आपने दो सॉलिड्स को साथ रख के छोड़ा है तो माइट भी पॉसिबल कि एक सॉलिड के मॉलिक्यूल दूसरे सॉलिड के मॉलिक्यूल के दरम्यान में जो स्पेसेस है उनको ऑक्यूपाई करें या उनको डिस्प्लेस करके उन जगह को ऑक्यूपाई करें, तो अपनी जगह बना ले बेसिकली। दिस इज डिफ्यूजिबिलिटी, मेल्टिंग। Solids can be melted when temperature is higher। तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरम्यान में उनकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली टू टेम्परेचर। So when temperature is increased, the kinetic energy of a molecule increase, which means the motion of molecules is increased। So they move very quickly in their places, जिसकी वजह से जो attractions है वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वीक हो जाती है और वो मेल्ट हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं। Sublimation, as I have told you, some solids are sublime solids, they can convert directly from solid to gaseous state। And you can see this is dry ice, which is carbon dioxide, solid carbon dioxide। ये डायरेक्टली जो है वो गैस में कन्वर्ट होती है, सॉलिड से लिक्विड नहीं जाती जबकि गैस में कन्वर्ट होती है, जस्ट लाइक नेफ्थलीन। एंड ये होता है इस वजह से बिकॉज ये जो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती इन सॉलिड्स की, तो वो जैसे ही वो ब्रेक होती है वो इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड वो इतनी ज़्यादा वीक है कि वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, there are two types of solids: crystalline solids and amorphous solids। Crystalline solids have got proper arrangement, proper geometry, while the amorphous solids have haphazard arrangement of molecules. They are not specifically arranged। Some crystals are here। Types of crystalline solids, type of solid, they are depending upon the bonding between the molecules. There are different types of crystalline solids: molecular, covalent, ionic and metallic crystals or solids। Molecular solids are or crystals are basically the molecule or solids or crystals in which atoms and molecules are present। जिसमें वो सॉलिड्स हो गए कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से बने, हम उनको कहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड्स में यूजुअली जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, वो तमाम सॉलिड्स होकर कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू बनते हैं। वो आपके पास
कोवलेंट सॉलिड्स कहलाते हैं. Ionic solids are solids which are formed due to formation of ions, oppositely charged ions. Metallic solids are usually solids which contain metallic or matte bonds and or metals as atoms. Metals के दरमियान जो bonding होती है और उससे जो सॉलिड बनते हैं उनको हम मेटालिक सॉलिड्स कहते हैं. There is a phenomena, isomorphism and polymorphism. These are two different phenomena. Isomorphism, iso is for same, morph is for structure, morphology is a misbelief. So isomorphism is a process or phenomena, natural process in which different solids having different chemical compositions have got same structures, same morphology. Polymorphism is a phenomenon in which same type of compounds or solids having same composition have got different shapes and naturally available in different shapes. We have studied about the unit cell in a crystal lattice, the smallest unit which is repeated in a specific array or order to give the crystal lattice its structure. तो वो unit cell कहलाता है. There are 7 crystal systems: cubic, tetragonal, orthorhombic, rhombohedral, hexagonal, monoclinic, triclinic. These are all some crystals having different geometries. Basically, this geometry depends upon the length of the sides of the unit cell and the angle between the two sides in a unit cell. So when the angle and lengths are changed, the shape or geometry changes automatically. There are some examples of crystals having these geometries or crystal systems, or these are the crystals which are formed by these crystal systems. So it was all about chapter number 2. If you have any confusion, you can ask me.